डरनी केबे भी कॉन्फिडेंस रख तमे पारिबो आ भावनी जे तुमरो बैकग्राउंड कोन मु तो ए बैकग्राउंड रा आसीनी मु ओडिया मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गोटे गाँ रु आसीची केबे भी निज को छोट भाव at the moment you compare yourself to the others से दिन तमे तळ गुस निज ऊपर सब बळे आत्मविश्वास जोडा सेटा रख पॉलिटी इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जोटा के बुझीबा दरकार ना कि खोसीबा दरकार सो पॉलिटी रा बिगर पिक्चर होची पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है ना सो आमे सेई लेवल रे तो पढी बारे हमको लिमिट करिया पड़िबो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नॉन तो तमरो जो सिलेबस रे दिया जायछि दैट इज लिमिटेड टू इंडियन पॉलिटी that is related to Indian polity. Book list, source, anything? NCR develops. ठीक है देखो इंडियन पॉलिटी रो मु तुमको गोटे डिटेल सोर्स कहूची जो माने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नबो से माने बाय टिके अलगा हबो जेहेतु तमे माने पर्यंत कि चूज करिनो जो माने करबो सेपरेटली तम मो सते मिसियो मु कहबी तो एबे हमें जीएस पई स्टिक करिवा जीएस पई व्हाट आई वुड सजेस्ट यू स्टिक टू माय नोट्स जहां मु तुमको क्लास रे पढेबी दैट विल बी कवरेज ऑफ मैक्सिमम पोर्शन मैक्सिमम ओके प्लस एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी पढ़ी पारिबो नो प्रॉब्लम एनसीईआरटी ऑलरेडी हमरो YouTube रे क्लासेस होची 3 PM रे मैडम निजे नौ छुंदी तमे एनसीईआरटी करो गोटे माने बिल्डिंग हबो तमरो फाउंडेशन क्लियर हबो बट जेहेतु तमे ऑलरेडी फाउंडेशन कोचिंग नौच तो एठी जहां भी तुमको पढ़ा हबो जहां भी मु पढ़ेबी कि मैडम पढ़ेबे दैट विल बी इंक्लूसिव ऑफ एनसीईआरटी आ ता पय सेपरेटली एनसीईआरटी पढ़िया भी दरकार नै तमे आउट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू शुड मु कहबिन जे नै पढोनी बिल्कुल तमे पढ़ी परिबो किछि असुविधा नै जानिबो डेमोक्रेसी कोन एटा कोन सेटा कोन जानिबो तमे पढो किंतु जहां एठी पढ़ा हबो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट सो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट स्टिक टू द नोट्स जहां मु क्लास रे पढ़ेबी तमे रिकॉर्ड तमे देखि परिबो लास्ट 2 इयर्स रिकॉर्ड प्रीलिम्स हो किमा मेंस एग्जाम हो जहां हमें सजेशन देइथिलु मैक्सिमम क्वेश्चन सेठु आसीची ओके ये हला तमरो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नॉन जदी की किनिछ बही लक्ष्मीकांत किनिछ की किनिनो जे जो बही किनिछ किनि दियो आ जदी तमे किनिनो ऑब्वियसली लेटेस्ट एडिशन किनिबो हैं बिकॉज़ जदी गोटे पिला बही किनि देइछि मु चाहूनी जे तमे टंका गुडा नष्ट करो आ जो तमरो एक्स्ट्रा जो नुआ एडिशन रे 2-3टा जिंस केवल एक्स्ट्रा अछि से 2-3टा जिंस एक्स्ट्रा पय ता पय इट इज नॉट वर्थ ऑफ स्पेंडिंग सम कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रुपीस दैट इज द रीजन ना तो लक्ष्मीकांत तमे गोटे बही किनि दियो आउ हमरो इंस्टीट्यूट तरफ यू विल बी गेटिंग अ स्टडी मटेरियल सेटा तमे रिवीजन टाइप रो तमे पढी परिबो लक्ष्मीकांत बहीटा दरकार तुमको आउ मु जहा क्लास तुमको देबे कि मैडम जहा तुमको देबे नाउ स्टूडेंट्स एट लक्ष्मीकांत को नहीं कि केतरा क्वेश्चंस अछि प्रथम क्वेश्चन इफ आई रीड लक्ष्मीकांत बुक कैन आई क्लियर प्रीलिम्स माने प्रीलिम्स रो जो पॉलिटी क्वेश्चन गुडा मु ताको आंसर देई परिबी कि मु 100% हां तो कहिबेनी बट मेजॉरिटीली यस मेजॉरिटी तमे पॉलिटी रे एटलीस्ट तमे मिनिमम 70 to 80% क्वेश्चन तमे एठी देई दबो लक्ष्मीकांत बही जे तमे पढिबो आराम से तमे 70-80 क्वेश्चन प्रीलिम्स रे तमे देई दबो ओके व्हाट अबाउट मेंस एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम लक्ष्मीकांत पढिले केते परसेंटेज मु करि परिबी हार्डली 10 to 20% ताल सर आपण लक्ष्मीकांत बही काहे कहले मते इमदा गोटे बही कहंतु जोतरे कि मोर 100% जीवो
ओके देयर इज नो 100%। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ବିନେସନ ପଢିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରେ you will be getting factual information। ଆଉ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜେନରାଲି अवॉइड करे फैक्चुअल जिनस गुडा तुमको मैडम पढ़ाई देबे बिकॉज मते पर्सनली फील हुए कि मोर जोटी अधिक दरकार तमर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवा किसी माने हार्ड डिफिकल्ट टॉपिक गुडा को बुझेइबा सो आई विल स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम आ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डेट केबे कोन हेतिला कोटा को राज्य केबे एस्टैब्लिश हेतिला सेगुडा मु दरकार नै सेगुडा तुम निजे भी पढ़ दे परिबो अंडरलाइन करके हाइलाइट करके तुम निजे भी घोषि दे परिबो सेगुडा बट किछिरा कांसेप्ट अछि जोडा कि बुझिबा मेजॉरिटी कांसेप्ट बुझिबा ठीक कष्ट सेगुडा रे मु निजे तुमको आराम से बुझेबी मो क्लासेस गुडा सफिशिएंट ता बादे तुमको एक्स्ट्रा कोनोसी ना वीडियो दरकार ना कोनोसी स्टडी मटेरियल दरकार ना कोनोसी एक्स्ट्रा बही दरकार एतिक मु तुमको गारंटी दे पारि तमरो काम केते जेतिक समय तुम एठी बसिबो पांच इंद्रिय क्लास रहया दरकार क्लास रे ही तमरो माने 95% तमरो पाठ एठी ही सरजिबो ठीक अछि तो लक्ष्मीकांत बही मु काहे कहली बिकॉज़ तुमको हेल्प करिवो लक्ष्मीकांत बहीटा सो व्हाट आर द बुक लिस्ट लक्ष्मीकांत दैट इज वन स्टैंडर्ड गोटे ही बही तुम किनो आउ जो हायर स्टडीज अछि मु चाहुनी और भी बहुत सारा अछि हम जदी खाली ना सुनिया पे चाहू मु कहि दोछि गोटे अछि डॉक्टर हम तमर डीडी बसु गोटे अछि ओके आ गोटे अछि सुभाष कश्यप आ गोटे डॉक्टर बीएल फाडिया दीज आर नॉट रिक्वायर्ड मु पढौछि बोले मु दरवाजा टाइम मु पढै दिले जिंस गुडा मैक्सिमम बही आई हैव कवर्ड आ मु जदी एक्स्ट्रा जान नथिबी लक्ष्मीकांत रे पर्यंत जदी मु जानिथिबी आ तुमको मु एक्स्ट्रा कोन पढेबी आ मोर मैक्सिमम लेक्चर गोटा लक्ष्मीकांत सहित माने बियॉन्ड लक्ष्मीकांत मु कहबे किसी किसी जिंस तमे पाइबोनी सो एगुडा किनिया दरकार नै अननेसेसरी बिकॉज तमे तमरो ए जो ब्रेन अछि याको तमे कॉम्प्लिकेटेड करनी एमितरे भी 9टा 10टा कोने तमरो सब्जेक्ट अछि तो ब्रेन मु कोन मधुमक्खी महुमाछी रे फणा बळी मु भाबे ए महुमाछी रे फणा भितरे तमे जेति की भर्ती करबा जो जिंस भर्ती करबा से ऑक्युपाई हे जीवो अननेसेसरी कोन पई तमे ए सब जिंस भर्ती करियो अब ए सब लैंग्वेज बुझिबा भी कष्ट लक्ष्मीकांत बहीटा पॉपुलर काहे कि ना एटा सरल रे लिखा है इजी टू लर्न सिंपल इंग्लिश यूज करा है तमे डीडी बस जदी पढिबो तो मुंडा आ काम करिवो रे तमे कहबो जे मु आ नेबिनी पॉलिटिकल साइंस के बेबी ठीक আছে ये हैला तमरो बुक सोर्स या सहित मु तुमको गोटे हैंडबुक कहूची हैंडबुक ता तमे निजे पाकर रखिदिबो हैंडबुक होची द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय पीएम बक्सी ए दीटा बही किनी दियो जदि तमे एटा भी किनिया पे चाहुनो ताले भी तम पैसा बंचाया पे समस्त पाखे स्मार्टफोन अछि ओके तमरो जो एप्लीकेशन डाउनलोड जो करा जाए सेठी सर्च कर दबो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट रे ऐप अछि डाउनलोड कर दबो जदि तमे किनिया पे चाहुनो बट मु बिलीव करे मैक्सिमम पिला तमे जदि कंफर्टेबल माने बुक देखिया पे यू कैन बाय इट हार्डली आई थिंक 100 केते टका पड़िबो मात्र सर ए बहीटा कोन ए बहीटा मु डिटेल पढिबे ना उभय मते डिटेल एम लक्ष्मीकांत तुमको लाइन बाय लाइन पढिया पड़िबो पीएम बक्सी एटा रेफरेंस हैंडबुक अर्थ भारतर संविधान होची एटा भारतर संविधान रे जहा जहा आर्टिकल अछि सब गुडा एठी अछि now that comes to the next question sir is it necessary to remember all the articles এটা ଗୋଟେ कॉमन क्वेश्चन था सेति भाई पिला स्टार्ट कर देबे पीएम बक्सी गोट पेज बाय पेज टारगेट रखिबे एवरीडे डेली बेसिस रे मु दीदीटा पेज घोसी के मन रखिबी नो इट इज नॉट नेसेसरी लॉ ऑप्शनल इज नेसेसरी संविधान रो सब गुडा आर्टिकल तुमको जानिया पड़िबो दैट इज लॉ ऑप्शनल पे दरकार नॉट फॉर इंडियन पॉलिटी पाई किछिटा स्पेसिफिक आर्टिकल ही तुमको दरकार
कॉन्स्टिट्यूशन रो लिमिटेड आर्टिकल तमे मन रखिबो केमिति मन रखियो से सब जिंस भी कहि देबी परे सीआरपीसी आईपीसी रो किछिटा बेसिक जिंस तमे दि तीनटा खाली सेक्शन तुमको मन रखिया पड़ियो दैट्स इट अब जेति कि तुमको मन रखिया पड़ियो सेति कि मु तुमको कहिबी ए बहिटा कोन पई जति तमरो न्यूज़पेपर गोटे आसिला किछि गोटे तुमको जानिया पड़ियो ना कि सपोज न्यूज़पेपर लिखि छि कि आर्टिकल 356 तमे हठात करी तमे जानि ना आर्टिकल 356 तमे कह सर मु गूगल रे सर्च करबी स्मार्ट इनफ यू कैन डू दैट नो प्रॉब्लम बट आई एम टॉकिंग अबाउट मोर ट्रेडिशनल वे तुम सांगे सांगे बही खोल 356 एक्जाक्टली संविधान रे कोन लिखा है रिलेटेड टू 356 कोन इमरजेंसी प्रेसिडेंस रूल विषय लिखा है ता विषय तुम दी लाइन पढ़लो नोट मेकिंग कर ओके तो तुम जदि किनिया पे चाहो ना जेमति मु कहली मोबाइल रे तुम डाउनलोड कर दे परिबो फ्री ऑफ कॉस्ट रे एप्लीकेशन अछि तो तुम जेतोले भी अछि तुम सेटा को भी देखि परिबो किबा यू कैन टेक हेल्प ऑफ द गूगल आल्सो ऑलराइट एति क्लियर अब किसी प्रश्न अछि एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक लिस्ट सोर्स book list source anything पचार दियो किछि भी जदि अछि मन रे ना मु तो डाकी देबी एडा दरकार नै एडा मटेरियल स्टडी मटेरियल गोटे प्रॉपर गोटे स्टडी मटेरियल मिलिबो सेपरेट माने बुक टाइप रो गोटे मिलिबो तुमको टास्क मोर क्लास सहित बाकी जिंस तुम लिंक करिवोनी हां बिकॉज़ क्लास मु जो क्लास रे जिंस गुडा तुम डिलीवर करिवे दैट विल बी फार रिचर देन एनी स्टडी मटेरियल और एनी बुक्स तो मोर नोट्स गुडा मु जहा पढेबी दैट विल बी बोथ फैक्चुअली भी अधिक इंपोर्टेंट ता सहित एनालिसिस भी इंपोर्टेंट रही सो यू स्टिक टू दैट मैक्सिमम क्वेश्चन तुम सेड ही सॉल्व हेचियो अब जहा मु कहिबी सेटा मन देख खाली सुनिबो प्लस तमर मिस ही जाउछ आई थिंक रिकॉर्डिंग तुमको एक्सेस मिल जाइतो स्टूडेंट पोर्टल रे तो रिवीजन सेट भी कर देबो जहा तो रिकॉर्डिंग होची सब वीडियो गुडा तुम सेटू रिवीजन करो जहा जहा तमरो हेची now comes to the another part of the topic is the language. As I said, every subject has its own unique language. Every subject. Language is also called I'm not talking about the Odia English language. I'm talking about the way you present. जेमती इकोनॉमिक्स रे टोटल को कौन कह सपोज तमे you do addition or multiplication or whatever you do and final गोटे आंसर मिले सेटा को तमे कौन कह तमे टोटल बोली कहो कि no in mathematics you call as total but in economics you use a word called as gross total रो आ गोटे ना कोन gross so that is the economical term so every subject has its own language and polity also has its own language and try to develop that language okay why is it important to develop the language जेतेबेले तमे आंसर राइटिंग लेखिबो तमरो जो खाता इंडियन पॉलिटी खाता मोस्टली जने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो प्रोफेसर किमा पॉलिटिकल साइंस रो प्रोफेसर इवैल्यूएट करिवो मोस्टली ए दुईटा भितरु किए जने बिकॉज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो भितर भी पॉलिटी आसुची पॉलिटिकल साइंस इज मोर रिलेटेड टू पॉलिटी ए दुईटा भितरु किए जने प्रोफेसर तम खाता इवैल्यूएट करिवो सेमानकर 30-40 वर्ष लानी सेमाने सेई गोटे सब्जेक्ट रे सेमाने महारथी हासिल करछन्ते ऑब्वियसली पीएचडी होल्डर सेमाने का सामना रे जदी तमे राम इज गोइंग आई एम मीटिंग यू आर सिटिंग एई भला जदी तमे शब्द वर प्रयोग करिवो दैट इज नॉट अ वेरी गुड इंप्रेशन बट तमे जदी सेई सब्जेक्ट स्पेसिफिक जदी किछिटा शब्द यूज करिलो देन दे विल बी इंप्रेस्ड आ इंप्रेशन मार्किंग ओपीएससी रे अछि कंटेंट क्वालिटी कंटेंट लिखिबा तो गोटे जिंस बट इंप्रेशन भी गोटे मार्किंग अछि गोटे पिला बहुत तार हैंडराइटिंग बहुत सुंदर अछि आ गोटे पिला
सेम कंटेंट रखी एई पिला भी सेम कंटेंट रखी बट हैंड राइटिंग यार खराब अच्छी तार बहुत सुंदर अच्छी ओबियसली गोटे 0.5 मार्क कि 1 मार्क एक्स्ट्रा ताको निश्चित रूप मिल जिवो तुम केते तुम ये करछ कर तो सही भलिया लैंग्वेज रो जो कमांड ता तुम डेवलप करिया पे ट्राई करो लैंग्वेज रो कमांड केमिति डेवलप हबो न्यूज़पेपर रीडिंग बुझी पारछो जे तुम ऑल ऑफ यू हैव अ प्रैक्टिस तुम जिते तुम मैगजीन पढ़ तुम मंथली मैगजीन पढ़ कि वीकली पढ़ कि ईयरली जिते मैगजीन पढ़ देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एती तुम गारंटी तुम जानि रखो बिकॉज़ व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू डेवलप द कमांड ऑफ द लैंग्वेज दीटा न्यूज़पेपर द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस ओडिसा रे द इंडियन एक्सप्रेस आसुनी कोडा आसुची द न्यू इंडियन एक्सप्रेस आसु जोडा कि तुम दरकार नै ओपीएससी ପାଇଁ ओडिशा करंट अफेयर्स मैगजीन अछि दृष्टिकोण बेस्ट मैगजीन ताकू फॉलो करो एक्स्ट्रा दरकार नै जदी द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस भितरे कोन डिफरेंस खाली एति कि द हिंदू रो जो शब्द रो अर्थ गुडा टिके डिफिकल्ट रहइबो तो जदी तमे इंग्रजी प्रति एते एक्वाइंटेड ना हो तो बुझिया ପାଇଁ टिके डिफिकल्ट हो तुम बारंबार डिक्शनरी कि गूगल रे सर्च करिया पड़े आ द इंडियन एक्सप्रेस ता लैंग्वेज बुझिया ପାଇଁ टिके इजी हबो आ आज का डेट रे both the newspapers are relevant किछिटा सुपर स्मार्ट पिला थिबे समाने दीदीटा न्यूज़पेपर पढिबे डोंट डू दैट रीड ओनली वन न्यूज़पेपर तुम तो सेति की करिबे सारी परिबोनी स्टार्ट करि छ न्यूज़पेपर रीडिंग कर नै पर्यंत करो डरनी केबे भी कॉन्फिडेंस रख तमे पारिबो आ भाबनी जे तमरो बैकग्राउंड कोन मु तो एई बैकग्राउंड रा आसीनी मु ओडिया मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मु गोटे गां रु आसीची केबे भी निजु को छोटो भाबनी at the moment you compare yourself with the others से दिन तमे तळु खसी गला निजो ऊपर सब बेले आत्मविश्वास जोडा सेटा रख ओके तो क्लास रे पे जते बेले भी जहां मन आसी भोरबार तमे आंसर दियो डू नॉट हेजिटेट एट ऑल आई एम नॉट गोइंग टू जज नीदर एनीबॉडी विल बी जजिंग जहां भूल करिवो एठी ही करो जहां ठीक करिवो एठी ही करो सो दैट एक्चुअल एग्जामिनेशन रे जेमति तमरो भूल होबरे ऑलराइट Okay, so polity कौन? What is polity? What do you understand by polity? कौन बुझो? चलो डिस्कशन कर दो हमें ठीक है। इंडियन पॉलिटी कहले तबे कौन बुझो? गुड जन जने स्पीक बसी कुह भारत संविधान ओके कॉन्स्टिट्यूशन आउ ता भितर अछि प्रियम्बल ता भितर अछि सी भी ता भितर अछि सी ता भितर अछि पॉलिटी कहले कौन बुझो सेटा तो कॉन्स्टिट्यूशन है गेला रूल्स एंड रेगुलेशंस ओके ठीक है कौन रूल्स रेगुलेशंस कौन रूल्स रेगुलेशंस को पॉलिटी कहू ना कौन कौन व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन ट्राई करो बाकी को यूनियन एंड स्टेट कौन ताको आबे पॉलिटी कहबा कौन को ट्राई करो ऑनलाइन रे जो माने देखुछ लाइव तुम माने भी समस्त ट्राई करो ओके काहू कहबा पॉलिटी चेष्टा ही सब कुछ चेष्टा न कल तो हबनी आउ देखो मु आगुरु मु क्वेश्चन दे दोची मो क्लास रे मु बहुत इंटरैक्ट करे पिलांग सहित मु बहुत माने डिस्कशन करेबी आउ किछि पिला मु देखि जे पछे रहि कि आखि बुझे दे तो मोर नजर तो माने जाई परिबोनी बिकॉज़ मु से डरटा तो मु छड़ाय पे चाहूची ट्राई करो समस्त पॉलिटी कोन अच्छा चीफ मिनिस्टर विषय सुनिछो कि नहीं तमे सुनिछो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट माने विषय सुनिछो लोकसभा विधानसभा सुनिछो इलेक्शन सुनिछो सुनिछो कि नहीं सुनिछो यूपीएससी ओपीएससी विषय सुनिछो ना पंचायत रे इलेक्शन हो से विषय रे सुनिछो तो जानिछो पॉलिटी आ कोन ये तो पॉलिटी आ कोन
तो सब जानते तुम तुम जान पॉलिटी विषय प्रेसिडेंट विषय जान प्रेसिडेंट इलेक्शन केते वर्ष पर इलेक्शन होती या को कहते कौन प्रेजेंस ऑफ माइंड ମୁଁ ऑलरेडी हाथ देखै सारानी तुमको तुम जब एगुड़ा तुम बुझी पारिबनी बी अटेंटिव इन क्लास 5 years प्राइम मिनिस्टर एबे जो इलेक्शन होबा एटा को इलेक्शन होबो लोकसभा ପାଇଁ इलेक्शन होबो विधानसभा ପାଇଁ इलेक्शन होबोनी विधानसभा कोठी अछि लोकसभा कोठी अछि विधानसभा स्टेट रे अछि राज्य रे अछि लोकसभा सेंटर ठीक अछि राज्यसभा सुनिथिबो ना सुप्रीम कोर्ट सुनिछ हाई कोर्ट भी सुनिछ कोन सुननो तमे तमे तो जानिछ पॉलिटी लक्ष्मीकांत बही कथा जो मु कहू तमे चैप्टर टी उल्टे के देखिला जो जो शब्द गुडा मु कहिची जदि सेही शब्द नथिबो ताले मते कहइबो हैं मौलिक अधिकार तमे जानिनो कोटे दिटा कहले मौलिक अधिकार कोन तमरो को हां फंडामेंटल राइट अच्छा इंग्लिश रे कहसी फंडामेंटल राइट टू स्पीच आ गोटे को तमे को राइट टू फ्रीडम ठीक अछि चलिबो आ गोटे को तमे मौलिक अधिकार को राइट टू इक्वालिटी आउ स्पीच कहि देले कॉन्शियसनेस ओके मौलिक दायित्व फंडामेंटल ड्यूटी तमर किसी दायित्व नहीं सर मोर केवल अधिकार अछि मोर कौन प्रकार दायित्व नहीं तमर दायित्व कौन अछि जान न हाँ जातीय पताका को सम्मान जणेबा एटा तो समस्त जानिछो किंतु एटा तमे जानिनो जे सर एटा फंडामेंटल ड्यूटी भितरे आसुची एतिकी तो कथा ना है ना पार्लियामेंट रे बिल पास हुए जानिछो बिल गुडा लोकसभा हमर तमरो विधानसभा रे भी बिल गुडा पास हुए तमे जानिछो गवर्नर बोली जने अछन जानिछो कि नहीं जानिछो तो ओडिया रे राज्यपाल यूनियन टेरिटरी अछि जानिछो आ कोच तमे जानि न पॉलिटी तो सब जानिछो तो मोर आ कोन दरकार यू नो एवरीथिंग प्रॉपर जानना सो पॉलिटी पिला भाबते बहुत इजी पढ़िया पई बट डिफिकल्ट भी नुह देखो पाठ इजी से जेतोले टीचर तुमको इजी कराइबे ओके कौन सी भी पाठ तुमको जब लागुच यूट्यूब खोल देले तुम देखियो 48 आवर्स मैराथन इंडियन पॉलिटी इन वन शॉट एम लक्ष्मीकांत इन वन शॉट से स्टार्टिंग करके छाड़ देबे तुमको लागे मते आ कोन कोचिंग तुमको एठु ही सब छाड़ देबे but I can guarantee you will not understand because you have never understood the essence of the subject तमे केवल चैप्टर पढ़िया पे ट्राई करछो सो मु सेही जिंस कहबे कि आज रो क्लास परे जेतले लक्ष्मीकांत बही चैप्टर स्टार्ट करिवो उल्टे तुम बुझी परियोनी भलसे तमे केवल खुशीबा हबो प्रेसिडेंट हां प्रेसिडेंट कोन इलेक्शन केमती हुए कोन कोन पावर अछि यू विल ट्राई टू मग अप मेनी थिंग्स है ना नेवर मग अप पॉलिटी इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जोटा के बुझीबा दरकार ना कि घोषिबा दरकार सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बुझो बुझिया पे आमे टिके पछुकु जिबा पछुकु माने मु ए पछुकु फ्लैशबैक करेक्ट some millions of years of before है ना सही समय रे लेट्स से स्टोन एज
ସେଇଠି ଲୋକ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, କେଭରେ ରହୁଥିଲେ। ସୋ କେଭରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। If this is the earth, ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ, ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ। ଏସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ କାହାଠୁ ଡରୁଥିଲେ? Animals. During that time, animals was the biggest threat. So we were afraid of animals. Now animals are afraid of us. You know, do you know the basic purpose of human life? कौन? हमें कौन अचीव करने पे चाहूँचे? Peace. Okay. Ultimate goal कौन तुम्हारा? Need थियो. कौन दरकार? Basic कौन दरकार? Food, shelter, clothes. खाद्य, वस्त्र, बासगृह दरकार. Okay. वस्त्र बासगृह छाड़ी दियो से समय तो वस्त्र बासगृह किसी नथिला तो गोटे जिंस दरकार जोड़ा कि पेट माने खाद्य दरकार खाद्य खाई कि तमे कोन करिवो व्हाट नेक्स्ट खाई सालो देन व्हाट नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस खाइबा दरकार कोन पई पहुंचिया पई सर्वाइवल द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रेस सर्वाइवल जहां हमें स्वप्न देखुचे तमे ओएस ऑफिसर कि आईएएस ऑफिसर होबा पे चाहू इफ यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव योरसेल्फ हाउ विल यू एस्पायर सो सही समय रे सर्वाइवल वाज द बिगेस्ट चैलेंज why because animals were biggest threat food was the biggest threat जंगल को जीवा खाइबा हमें जानी ने कौन खाइबा कौन नुह हंटिंग रे जाउथले लोको एनिमल हमको अटैक करले that was the biggest threat to us so survival was the biggest threat sole objective is how to survive you know the beauty of human race हमें काहे कि एते एडवांस मु कहिबी because of all this brain we are just like another species on the earth there are millions and billions of species हमें ता भितरे गोटे but we made ourselves advanced हमें survive कले and we generated the next generation next generation next generation next generation that is also how we survive बहुत सारा जीवन जीव जंतु एक्सटिंक्ट हे गेले जेमे डायनासोर कथा को they could not survive extinct केमते हे गेले because तांकर limited production they could not reproduce further for many reasons but human being somehow we managed to do so despite all the odds अब हमें कंटिन्यूअसली भाबिले कि आउ कोन बेटर करि हबो सो सेही समय रे भी the objective was to survive ओके जदि गोटे जणे व्यक्ति जदि जंगल को जीव कोनोसी प्रकार हंटिंग करिया पई शिकार करिया पई तार चांसेस केते कंपेयर्ड विथ पांच जण जदि एका संगे जिबे हंटिंग करिया पई तार चांसेस केते कार चांसेस बेटर पांच जण गोटे कथार अछि कि जदि हमें गोटे आंगुठी रे जदि काम करिया पई ट्राई करबा हमें पारिबानी बट जदि हमें गोटे मुठी ये कर दबा तले शक्ति अधिक हो जाए तो जेतोळे हमें मिसी की रहिबा ताहले कोन हबो बेटर opportunity better survival factor so there comes the concept of
फैमिली सोशियोलॉजी ऑप्शनल रे तुम पढ़िबो फैमिली कांसेप्ट सो तो फैमिली से टू स्टार्ट हैला एटी जो माने रहुदले एकुडिया नोबडी न्यू फर्स्ट मनीष किए किए आदम कहंती किए कोन कहंती हमर इंडियन माइथोलॉजी हिसाब रे मनु इज द फर्स्ट पर्सन इंग्लिश मानक हिसाब रे आदम इज द फर्स्ट पर्सन नोबडी न्यू आमे जानि ने कोन ओरिजिन एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड आल्सो अगेन मु कहले द लिमिट जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नॉन एबे तमे थेसिस खोजिया स्टार्ट कर दियो नै सर तुमको ए टॉपिक ता पढाइछंती यार मु ओरिजिन जानि कि म रखी बिताले डोंट डू दैट so survival is the most important factor then what did they do they try to stick together okay so hardly गोटे फैमिली रे केते मेंबर हेई परिबो आजिका डेट तो गोटे फैमिली रे मैक्सिमम 3 जन 4 जन छोटो परिवार बट आई थिंक तम मान को पेरेंट्स कर जो पीढ़ी जदी देखिबो किबा तांकर पेरेंट्स कर पीढ़ी जदी देखिबो सेही समय 11 12 15 जन भी जन जन मेंबर थांती ठीक हां जहा हो मिनिमम तो सेही वाला थाए 11 12 15 तम मान को पेरेंट्स किबा तांको पेरेंट्स जदी तमे पचारिबो तमर जदी न थाई पारे बट तांकर परिचय रे से माने जानि थिबे कि एई भला 15 थांती बिकॉज़ सेही समय एते भाबंतनी कि नाइ हमको फैमिली प्लानिंग करबा कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करबा से सब जिंस तांको माइंड रे न थाई केबे भी तो लेट अस अज्यूम दैट ओनली 15 20 गोटे गोटे फैमिली थिबे बट गोटे फैमिली अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव 15 20 जन तबे केते सर्वाइव करिवो सो फैमिली सहित आउरी भी अधिक फैमिली कोन हेले जोड़ीबा स्टार्ट हेले दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइब कल्चर ट्राइब कल्चर आज भी शेड्यूल ट्राइब हम भारत रे अछंती वेयर डज दैट कम फ्रॉम दैट इज द ट्राइब कल्चर केमिति हला multiple families they came together and they started staying together that is the creation of tribal culture again what is the main purpose is to survive if we stick together we survive for longer period of time if we stay alone we won't so hame survive kariba so एमती बहुत गुडा फैमिली कोन कले से माने एका संगे रहया स्टार्ट कले तो एठी तमे गोटे ट्राइब देखि परिबो एठी गोटे ट्राइब देखि परिबो एठी गोटे ट्राइब एमती मल्टीपल जगह रे तमे ट्राइब देखि परिबो so let us assume there is a tribe जोठी let's say there are 50 people or 50 members in the tribe 50 जन मेंबर अछन्ते गोटे ट्राइब गोटे ग्रुप रे and that is nothing but society right 50 जन मेंबर अछन्ते गोटे ट्राइब किमा गोटे ग्रुप रे now a decision has to be made गोटे डिसीजन नबागु पड़िबो कोन से प्रकार डिसीजन नै पारे सपोज आज हमें कोन करिबा कोन स्वीकार करिबा और एनी डिसीजन कि तांकर जदी से जोडी रहू चंदी सेठी गोटे किछि गोटे चाहू चंदी कि सपोज हमें वॉल करिबा कि न करिबा कि हमें आपको एंट्री दबा कि न दबा गोटे डिसीजन केमति दिया जिवो 50 जन मेंबर अछन्ते ना ना हाउ टू रीच टू द डिसीजन लीडर करिवो केमति डिसीजन हो 50 जन मेंबर केमति हो को मेजॉरिटी जहा कहबे okay how will you decide ता कथा इंपोर्टेंट कोन पे केमिति बट हाउ जी बड़ माने कोथरे बड़ एज रे जी बड़ थिवो ओके केमिति कॉमन सेंस अप्लाई करो 50 जन मेंबर अछंती ता भितर पुरुष महिला छुआ समस्त थाई पारंती मु कहूची गोटे डिसीजन नबागु पड़िबो
बट हु विल टेक दैट डिसीजन? तमे जदि कहबे कि नाही आमे भोटिंग कर दबा 50 जन रु सपोज 40 जन हां कले 10 जन मना करिवे, बट 10 जन कोन कले अपोज कले, अब से 10 जन जदि अपोज कले तमे तांकर खिलाफ रे जदि तमे गोटे डिसीजन नै छ से माने तम ट्राइब रे रहिबे कि? तो ट्राइब जो सर्वाइवल इज द एंड गेम, सर्वाइव होला ना भांगी गला, भांगी गला तमरो। तमे तो यू कुड नॉट स्टे टुगेदर, 10 जन पळेले तमरो ट्राइब, सो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। कोन सॉल्यूशन हो ताले केमिति डिसीजन होगला से समय रे? बेसिक बेसिक मु तुमको पॉलिटी पढ़ौनी, मु तुमको कॉमन सेंस पढ़ौ, स्टोरी कहूनी, लिसन टू द स्टोरी करे। केमते हां ताको सुप्रीम बोली भाबुथले, दैट मींस देयर नीड्स टू बी अ लीडर। डू यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स जोटा कंसेंसस बेस्ड रे हेई पारे नहीं। कंसेंसस रो अर्थ समस्त राजी होबा दरकार। देयर आर सर्टेन डिसीजंस व्हिच हैज टू बी टेकन। सो एठू से माने कोन डिसाइड कले कि 50 जन मेंबर भितरु जणे मुखिया हेबे, लीडर। एवरी ट्राइबल कल्चर हैज दिस वन। तुम देखो इतिहास पढ़ी देखिबो जे तळे सोशियोलॉजी ऑप्शनल तमे पढ़िबो एसु जिंस, एवरी ट्राइबल कल्चर तमे जीएस रे भी अछि, ट्राइबल्स विषय रे पढ़िबो तमे। प्रत्येकटा ट्राइबल कल्चर रे देखिबो तांकर सोसाइटी भितर जणे लीडर थिबे। सो लीडर जहा कहबो दैट इज फाइनल। हाउ टू डिसाइड द लीडर? Basically, who will be the leader? Who can lead? Who can lead? सेही समय रे बळ जहा पाकर थिला, बळ जहा पाकर थिला। जंगल रो रूल कोन? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मे बी किछि लोको से क्रीडा माध्यम रे हो किमा कोनोसी प्रकार शिकार रे हो से माने निजो को प्रूफ कले आ सीए मुखिया हेले। ट्राइबल कल्चर से ही सिस्टम थाए। सो वर्तमान मुखिया जहा कहिबे इररेस्पेक्टिव वेदर यू एग्री और डू नॉट एग्री, यू हैव टू फॉलो। बुझियला? क्लियर? 50 जनर ग्रुप, दे चोज अ लीडर। लीडर जहा कहिबे माने सुनिबे, बट एट द सेम टाइम ए जो 50 जन लोक माने एमान को मन भितर भी गोटे विश्वास कोन अछि कि लीडर जहा भी डिसीजन नबो सी एई ट्राइब रो हितरे नबो, फॉर द बेनिफिट ऑफ द ट्राइब नबो। केबे भी ट्राइब रो अगेंस्ट जाय कि सी केबे भी कोनोसी डिसीजन नबोनी। सेही फेथ रे एई लोक माने एमान को ऊपर रखिचंती। आ लीडर भी कोन रखिछि कि नाही मु जो कथाटा कहिबी एमाने मो कथाटा सुनिबे। सो इट्स अ वाइस वर्सा रिलेशन, इट कैन नॉट बी वन साइडेड। इट्स अ वाइस वर्सा रिलेशन। एमाने भी ट्रस्ट रखिचंती कि लीडर केबे भी हमको धोखा दबनी, हमर हितरे नबो, हमर डेवलपमेंट रे सब बोले नबो। सेम इज द केस फॉर द लीडर। ना ना ए जो 50 जन लोक अछंती, ओके, ए जो 50 जन लोक अछंती, 50 जन लोक मानक भितर भितर रिलेशन अछि। के कार मां भाई भौणी बापा सांग हेई पारे, बंधु हेई पारंते, अलगा अलगा प्रकार रिलेशन थाई परिवे। So the relation that you study in between the people of the society, से होची सोशियोलॉजी रे पाठ। गोटे सोसाइटी भितर जो व्यक्ति माने अछंती ता भितर रिलेशन जेतल तमे पढिबो केमिति मैनेज होची से मानक भितरे, दैट इज द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। एंड ए जो सोसाइटी और लीडर भितर जो रिलेशन अछि, दैट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई रिपीट, गोटे सोसाइटी भितरे
ये जो 50 जहाँ भी व्यक्ति अच्छा एमानक विषय जहाँ तुम पढ़ो दिस स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी तुम ऑप्शनल अच्छी मास्टर डिग्री भी तुम पे करती सोशियोलॉजी रे आउ गोटे सोसाइटी आ गोटे लीडर भितर कौन संपर्क अच्छी से संपर्क विषय जो पढ़ा दैट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस ठीक है इमेजिन कल आई थिंक वी आर गुड इन इमेजिनेशन थ्री इडियट मूवी रे देखी है ना इन केस ऑफ राजू रस्तोगी tell us how does an induction motor starts engineering college रे especially ଆମର ଭାରତୀୟ engineering college ଆଉ exclusively ओडिसा रे engineering college imagine there is a diesel engine तमे खाली imagine करो हम करिबि केमति imagine मु तो देखिनी केबे so now imagine ए जो छोटो 50 जन सोसाइटी को कैन आई मेक इट जूम गोटे जूम करके टिके इमेजिन कल ए 50 जन सोसाइटी टाको मु आज गोटे देश कहि परिबि कि नै भारत इज आल्सो 140 कोटी सोसाइटी कि नै यस और नो इंडिया इटसेल्फ इज 140 करोड़ सोसाइटी और जूम कल पूरा पृथ्वी द अर्थ इटसेल्फ इज अ बिग सोसाइटी यस और नो दैट यू स्टडी इन सोशियोलॉजी सो मु भारत कथा जदि कहबी 140 कोटी जनसंख्या लोक माने सब अछंती दैट इज अ सोसाइटी ओके एंड ऑन द अदर साइड द लीडर टा को भी गोटे जूम करी देखिलो आज का एई समय रे जो लीडर जहा काम करिछि आज का समय रे गवर्नमेंट से काम करने गवर्नमेंट जो अछि तमरो प्रेसिडेंट हेले प्राइम मिनिस्टर हेले दे आर आल्सो लीडर राइट से माने भी सही काम करछन ना ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल से माने डिसीजन नौचंदी आ लोक मानक पाखरे भी ट्रस्ट अछि कि नाही ये जो डिसीजन नेबे सी हमर हित रे नेबे केबे भी खराब रे नेबे सो तमे जदि जूम करी देखिबो याको तमे गोटे कंट्री कहि परिबो ये हला तमरो गवर्नमेंट तार अर्थ ये हला तमरो पीपल ये हला तमरो गवर्नमेंट so the relation between among the people within a country is the study of sociology and the relation between the people and the government is political science and if I can be very specific for India it is Indian polity so what is Indian polity it's nothing but understanding people and how they are linked with government that's it इंडियन पॉलिटी काहू कहबा गोटे साइड लोक माने माने आमे सब लोक ए माने केमिति गवर्नमेंट से कनेक्टेड अछंती दैट इज इंडियन पॉलिटी isn't it people under रे सिटीजन्स रहिले संविधान रे अछि से माने कोन ताकर अधिकार अछि से सब जिंस अछि गवर्नमेंट अंडर रे यू हैव नॉट स्टडीड जहां जहां हमें सब पढ़ले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गवर्नर इंस्टीट्यूशंस लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट सब जिंस गवर्नमेंट रे आसो आ एमाने केमिति लोक मान से कनेक्टेड ये होछि तमरो इंडियन पॉलिटी सो देयर इज a bridge between the people and the government सही समय रे कोन होतला भरबाली होतला एबे कोन भरबाली होय सब सपोज गवर्नमेंट हैज टू टेक सर्टेन डिसीजन कोन भरबाली ना बाय लॉ सो दिस इज योर सिलेबस इंडियन पॉलिटी तमे कोन पढिबो यू आर गोइंग टू लर्न थ्री थिंग्स इन इंडियन पॉलिटी one is people another one is the law another one is the government that's it I think तमे के इमेजिन कर नथिबो जे ए भलिया भी इंडियन पॉलिटी हेई पारे किछि ओडी एसो जिंस तमे you will not get it I can guarantee that people रे कोन पढिबो आम विषय रे पढिबा law रे कोन पढिबो what are the different types of law constitutional law bylaws statutory laws customary laws executive orders judiciary decrees बहुत सारा अछि गवर्नमेंट विषय कोन करिवो the positions held in within the government starting from the president prime minister
council of ministers, individual ministers, parliament, lok sabha, rajya sabha, lok sabha mp, rajya sabha mp, how they are elected, how they are removed, how the bill is passed, what is the process of passing a bill. Same is the case for the legislative assembly, legislative council, speaker, MLA, MLC, तांकर क्वालिफिकेशन कौन, केमिति इलेक्शन हुए, रिमूव केमिति करा जीवो, प्रेसिडेंट रे अगेंस्ट स्टेट रे रही गेले गवर्नर, हाउ द गवर्नर इज इलेक्टेड or selected or appointed. What is the right answer? Governor is appointed. Chief minister, तांकर मंत्री माने जो माने अछंती, judiciary, there is a Supreme Court, Chief Justice of India, Chief Justice of Supreme Court, the judges of the Supreme Court of India. Similar case for High Court also. How the laws of High Court and Supreme Courts are entering. What are the different types of jurisdictions in India? Original jurisdictions. Right? इस वजह से तुम पढ़ियो. और बहुत सारा institutions अच्छी. Election Commission, CAG, Comptroller and Auditor General of India, Attorney General, Advocate General, National Commission of Human Rights, National Commission for SC, for Women, for OBC, CEC, Election Commission. These things you learn. Fundamental right kaha ko kuha jaye? What are the different types of fundamental rights are there? Fundamental duty kaha ko kahiba? Directive principle of state policies kaha ko kuha jaye? What are the different schedules available in the constitution? This you learn. Extra jinse tamu kon darkar? Application. What is that application? कि गोटे कॉन्सेप्ट तमे जतन पढुछ कि मैं बुझुछ तार एप्लीकेशन ता केबे नै के अछि is right to vote a fundamental right? Application part. You have right to life under which article? Article 21 of Indian Constitution. You have right to life. But my question is, do you have right to die? That is application. Na? Civil service re मन रखो सब बोले. Never expect definition based questions. They will not ask you. Article 25 and 26 of the Indian Constitution talks about religion, freedom. 25 कौन कहूची? Individual, more अधिकार. I belong to a religion. I have all the right to practice and profess my religion. What are the challenges in Indian society? अच्छी तुम्हारा जहाँ को कौन कहा जाए? Communalism कहा जाए. Communalism रो अर्थ communal violence जो तैयारी होची, division तैयारी होची society रे, नहीं की तैयारी होची. Application part. Now तमे देखिथिबो दिल्ली रे कौन चली छी? Chief Minister is arrested. ता सहित पूर्वर तांका ministers are arrested. Application part कौन? Who is arrested is not important. When it is arrested is not important. But can an arrest happen to a sitting Chief Minister of a state? That is polity. So you need to understand the limit. Maximum पिला कौन भावंती कि current affairs रे मु date मन रखिबी, ना मन रखिबी, never do that. Not relevant for your exam. तम पे relevant कौन कि Chief Minister arrest हेई परिबे की? जदि सी arrest हेले, can he or she still continue to be the Chief Minister? What does the law says? Law रे gray area. Law is silent. Law रे किछ कोनोसी संविधान रे भी कोनोसी law रे लिखा है नहीं कि गोटे sitting Chief Minister arrest हेई सला परे कौन? There is no law. But everybody says कि how can a Chief Minister run the state
sitting inside a jail, because in order to run the state you need to sign everything. तो तुम पाखु ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाई परिबोनी, सो मोराली तमे रिजाइन दे दियो. But why should I do morally? Is there any law that says me once you are arrested you cannot become chief minister or you cannot continue as a chief minister? There is no law. To understand, बहुत सारा केसेस अछि, केशवानंद भारती केसेस, सज्जन सिंह केसेस, गोलोकनाथ केसेस, मेनका गांधी केस. There are many cases available. To understand those things. Fundamental right, आमर मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करिया पई सुप्रीम कोर्ट अछि, हाई कोर्ट अछि. फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करिया पई के अछि? You can understand article 32, reads to restrictions, habeas corpus, mandamus quo warranto, certiorari prohibition. जानिया पड़िबो. It's a very interesting subject provided you put interest. And believe me, when I took optional subject during my UPSC, I was so fascinating related to the politics. I never knew that I had to know so many articles. So there is, my dear, there is no shortcut to success. मने रखिबार गोटे ही उपाय रिविजन. सेतिक मु करिछि बोली आई एम कॉन्फिडेंट मु अनर्गल पॉलिटिक्स एठी गाई देई परिबे. मते ना कोनसी बही दरकार ना कोनसी मते सोर्सेस दरकार. आ सेटा पॉसिबल सेतबेले हे परछि जेतबेले रिविजन तमे करिछो. रिविजन रो मल्टीपल सोर्सेस. गोटे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रो गोटे रिसर्च पेपर आस्तिला, हाउ टू तमर मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाइबो केमिति. सो सी सजेस्ट करथिले कि जेतबेले तमे सुनो जहाँ भी मुझे क्लास रे कहि छी मु जानि छी तमे 100% पसंद नथियो तो काम रे. ओके, जेतबेले तमे सुनुचो तार लॉस हे जाय. ताको बढ़ाइबो केमिति लेखो, ताको बढ़ाइबो केमिति काहाकू गोटे एक्सप्लेन कर दियो. एबे मु मन रखिया पई मु तुमको एक्सप्लेन कर देबी, मु माइंड प्रिंट हे गला. बुझि पछो केवल सुनी कि मने 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 तबे ये करिवो तार रिटेंशन पावर कमी जीवो. अब ये गोटे दिन गेम नुह, ये T20 मैच नुह, ये टेस्ट मैच. आज जहाँ पढ़ी 1.5 वर्ष पर्यंत मन रखा पड़ो जे ये T20 शॉर्टकट मेथड कले जो आजिकल जो अकड़म बगड़म हाँ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल यही टाइप रो पढ़ा जदी पढ़िबो हे गेला सिविल सर्विस. तो तुमको ट्रेडिशनल मेथड जहाँ तुम पढ़ेबो राति रे सोइबा पूर्वरु गोटे धला कलर रो पेपर तुम A4 साइज रो पेपर जहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ीचो सिंपल कौन करियो मने पकेबो, माइंड काम कर दबो, तुम लिखिबो. ओके माजी हाँ डिटेल रे न लेखो, पैराग्राफ रे न लेखो, पॉइंट वाइज तुम लेखो. खाली बहुत तुम बुस्ट अप हबो, बहुत बुस्ट अप हबो. आ मे भी तुम जदी सांग साथी बनाइछो किबा क्लास पूर्वरु किछि समय आगुरु पळे आसो किबा क्लास पर किछि समय रहि जाओ, डिस्कशन करो कि आज मु ए टॉपिक टा पढिली, मोर एटा 5टा पॉइंट, तुम सेटा 5टा पॉइंट, दैट इज अनदर वे. कि तुम टेलीग्राम ग्रुप रे भी तुम डिस्कशन करि परिबो. ओके, सो पढ़ा तो तुमको ट्रेडिशनल वे ही करिया पड़िबो. छोटो मोटो शॉर्टकट कौन हेई परिबो बट लॉन्ग टर्म रे सब काम करेनि केबे. सो पॉलिटी बुझिला कौन, व्हाट इज इंडियन पॉलिटी, कौन जानला में ये होची हमर सिलेबस, पीपल, लॉ, गवर्नमेंट. अब इंडियन पॉलिटी रे अनसर्टेनिटी रो कोनोसी चांस नाही. इंग्रजी भाषा रे अनसर्टेनिटी लैंग्वेज किसी हम यूज करू, कौन कौन कहलो मे. तमे पढ़िचो? हाँ सर मु पढ़िची. प्रश्न पचारले तमे आंसर दे परिबो मे बी. ओके, ये जो मे बी ये जिनसटा पॉलिटी रे काम करेनि. पॉलिटी रे सबले शाल बी, यस और नो, मझी रास्ता नाही पॉलिटी रे. आर्टिकल 52 of the Indian Constitution, there shall be the president of India.
देयर मे बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अरे ये की शब्द देयर मे बी कौन भारत अछि माने तो प्रेसिडेंट रहय बाध्य हैं there is no maybe, there is no can be, there has to be, there shall be, there must be, ये सब लैंग्वेज यूज हुए. So it's an interesting subject because तमे तमरो आख पाखरे जहा चलीची गवर्नमेंट रे जहा चलीची मु सेथि पे पूर्वरो स्टार्टिंग करिया पूर्वरो ही तम सहित जो डिस्कशन मु करली ऑलरेडी यू नो मेनी थिंग्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब जानी छ तमे बस एतिकी जानी न कोन कि जो ऑर्गेनाइज्ड वे रे सिस्टमैटिक वे रे गोटे जानिबा दरकार कि से पूरा सिस्टम ता चले केमति मु जे तुमको गोटे सरल रे बुझेली तमे जदि आजि तमे यूट्यूब क्लास तमे जदि देखि थांत तमे सेही ट्रेडिशनल मेथड रे लक्ष्मीकांत र फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यू नो रेगुलेटिंग एक्ट ए एक्ट से एक्ट रो से घोषा विद्या स्टार्ट करथा था देन प्रिएम्बल पढी था फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढी था लास्ट को बाबा तमे पॉलिटी रे कोन बुझिलो काई तमे गोटे साइकिल रे जाउथिबा कि रिक्शा चलेया लोक को बुझेला पॉलिटी कोन हां तमे ताको जदि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग बुझेइबो रेगुलेटिंग एक्ट बुझेइबो सी केमति बुझेइबो तो तम पाठ सेते गोटे हेछि सेते गोटे रिक्शा वाला को तमे बुझेइ परिबो तमे जाउ छ पचाले बाबू तमे कोड जाइतिलो मु कोचिंग करिया पे कोन पढला आजि पॉलिटी पढले कोन पॉलिटी देखो तमे तमर शब्द नाही तम बाके ताको बुझिया पे तमे निजु मन भीतर कोन भाबियो मु बड़ बड़ पाठ पढछि याको मु कोन बुझेबी अरे तमर कैपेसिटी नाही बुझिया पे तमे बुझिनो पाठ तमे घोषिचो सो पाठ केबे घोषिबोनी सिविल सर्विस पाठ तुम जब चाहूच मेन्स रे भल मार्क आसु बुझिया पड़ो लॉ ऑफ द लैंड रे देयर आर कपल ऑफ लॉज ट्राई टू राइट डाउन गोटे होची कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जुडिशियरी डिक्री DCREE कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो मैंने ऑनलाइन अच्छो स्टूडेंट्स तो मैंने भी लिखी पारिबो साइड बाय साइड खाता पेन बाहर करके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जुडिशियरी डिक्री DECREE bylaws custom laws ओके bylaws custom law मु गोटे साइड रे लिखुची ऑर्गेनिक लॉ
write down these things. Law of the land रे ମୁଁ repeat କରୁଛି constitutional law, executive order, judiciary decree, by law, custom law, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲେଖି ଦିଅ ସମସ୍ତେ statutory law. Statutory law. ओके केतरा 1 कस्टम 1 2 3 4 5 6 छटा स्टैंडर्ड साइड रे मु लिखि छी ऑर्गेनिक लॉ पुन रिपीट करूची कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जुडिशियरी डिक्री बाय लॉज कस्टम लॉज स्टैट्यूटरी लॉज और ऑर्गेनिक लॉ हला लॉ ऑफ द लैंड लैंड माने माटी माने एटा केवल भारत पाई नुह आमे केमिति इंडियन पॉलिटी को जिबा प्रथम हम पृथ्वी विषय जानिबा कि पूरा पृथ्वी रे जते देश अछंती तांकर सेठी कोन चलची देन हमें धीरे 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 इंडियन पॉलिटी भीतर को एंटर करवा ओके आउ अगेन बिफोर कंक्लूडिंग मु एती कहूची लिसन टू माय क्लासेस केयरफुली घर को जाई रिवाइज करिवो लक्ष्मीकांत बहिटा को तमे रखिबो पाखे एबे डायरेक्टली पढिया दरकार नै टिके स्टार्ट हो पॉलिटी ताबरे पढले तमे बुझी पारिबो सब डोंट डू पीएचडी दरकार नै बिल्कुल भी आ जेति कि लिमिट करिवो तमे निजको आउ अवेयर रखो कौन चले कौन नहीं एबे जो डेली चीफ मिनिस्टर विषय से सब पॉलिटी रो पार्ट यू शुड बी अवेयर सो दैट तुमको लॉन्ग रन रे बहुत इजी हो क्लियर एति की किछ प्रश्न हो जति पचार दियो हां अच्छी पेशेंस धैर्य ना धैर्य बहुत जिनस अच्छी मु आज जदि कहबी सब बाउंस हो जिवो काली आउ आसीबोनी क्लास को कहते नहीं सारा क्लास तो बुझा पड़नी तो आई नो व्हेन टू से व्हाट तो तापे धैर्य रख समस्ते ऑलराइट दैट्स इट फॉर टुडे आज पई एतिक रखिबा आ जेहेतु आज प्रथम क्लास एंड जेतବେଳେ मोर नेक्स्ट पॉलिटी क्लास हबो आउरी हमें डीप को जिबा ई जो भीतर मु जहा जहा कहली यार हमें गोटे गोटे जिंस हमें डिस्कशन करिबा कि विभिन्न प्रकार लॉ भीतर कोन अछि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ काहा को आ जाय को समय एप्लीकेबल विभिन्न प्रकार जिंस गुडा को हमें कथा हबा ठीक अछि थैंक यू एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो माने लाइव अछो एनी स्टूडेंट एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड पचारि परिबो विष्णु प्रसाद आउ जे भी अछो एनी क्वेश्चन ओके होपफुली तुम मान को क्लास भल लगी पुणी आउ हमें नेक्स्ट क्लास रे देखा हबा ओके थैंक यू